Hi Neil. न्यू तपस्विनो जय जयकार हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तपस्या। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोल। जय जिनेंद्र। All right. Want to get started? Everyone ready? All right. Ready? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं। अच्छा बच्चे अच्छा बोलो जल्दी। बोलो। जय जिनेंद्र। यहाँ से बैठो। यहाँ से बैठो। All right. We'll get going today. Jai Jinendra, everyone. We'll try to or as these things are going so that it basically flows effectively. There are few admins who may mute you. Nothing personal. Just making sure that events go as smoothly as possible. So. Welcome to the celebration event of Swapna ceremony today on this second day of Pawan Paryushan. हमारा समाज वैसे तो relatively छोटा है, पर when it comes to the tapasya, it's absolutely phenomenal. So historically we have always seen कि सभी relatively speaking छोटे समाज में हमारे सभी members की तपस्या बहुत ही बड़ी होती है. तो सभी तपस्वियों को पहले खूब अनुमोदना और सबकी साता पूछते हुए जय जिनेंद्र. सब छोटे बड़े तपस्वी सुख साता में रहना, especially during this difficult COVID times, right? There are lots of Maharaj Sahib as well as Jain doctors India में काफी suggestions दे रहे हैं. तो this year especially be careful and be mindful of your immunity and make sure that you don't that you are not compromising immunity with that. हम लोग कल पर्यूषण के पहले दिन we had a very good opportunity from स्वामी जी अश्विनी प्रज्ञा जी. उनका lecture था. He gave us a very good overview of what's the importance of Paryushan, right? And Das Lakshan in our our environment. And he took a very good example कि कैसा एक इंद्रिय जीव या छोटे से छोटा जीव भी कितना important है. And he kind of correlated this whole COVID situation with that. So, but it's an important time, right? In our Jainism, where we are basically looking inward. We are doing introspection. We are basically doing meditation in form of samayek. We are doing we are begging for forgiveness, and we forgive in terms of pratikraman and lot of swadhyay, right? In if we were in India, ये 8 दिन में we not only do this meditation and pratikraman, but we also do swadhyay in presence of all the Gyani Maharaj Sahib and Gyani Jans, right? Gyani Jans. And it essentially during these 8 days, they talk about
कर्तव्य, right? For श्रावक के 5 important कर्तव्य during the Paryushan. And they also talk about on second day, they talk about um, the 11 kartavya throughout the year that Shravak has to follow, Paushad kartavya. And then there is a reading of 9 Vyakhyan from Kalpasutra throughout the remaining day. Thus Lakshan, same thing, it's the virtue each day the importance of virtue is discussed, it's focused, highlighted, and उसके ऊपर काफी सत्संग होता है, उसके ऊपर कैसे आगे बढ़े वो भी होता है, right? So we are here right today. We are all very, very fortunate that even though we are so far from India, where we have close सानिध्य of महाराज साहब, पर यहाँ रह के भी हम लोग सब आज ये स्वप्न दर्शन सेरेमनी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, and we are going through this very important event in Mahavir Jain Bhagwan, Mahavir Bhagwan's Janam, right, or Garbha and Janam Kalyana. And this is normally like fourth Vyakyan, which is done in 5th day of Paryushan, but we are fortunate to do to have that amongst us and amongst this Jain Samaj. With that, we'll quickly go through, Jigar, if we go to the next slide, right? We'll quickly go through the format for today's event. I mean, today's event is only possible from pretty much most of our Jain members, some sort of contribution, right? In one way or another. So really, really thank you everyone for putting this together. I, for one, but I'm sure I'm speaking on behalf of every single Jain members of this Samaj, is very excited to see what we have all put together collectively, and I can't wait. So what we'll do is we'll start with Naukar mantra, and to continue our bhav, we'll do a few stavans from Monica ji, Supriya ji, and Praful ji. We'll also have stavan spread it out throughout the event to celebrate specific event before a Swapna Darshan ceremony, but especially after Swapna Darshan ceremony as well, to celebrate Mahavir Bhagwan's birth event. There will be a Dev Darshan, short Dev Darshan, and then there is a that is a small with the help of Pathshala teachers, Shraddha ji and Monica ji. With their help, small kids have put together a beautiful slideshow that will be that will be played after that. And then they have also helped big kids put together the entire journey of Trishla Mata, how the events flow through, or how the events occurred. उसकी पूरी रचना उन्होंने 8 years and older बच्चों के साथ पूरी तैयार की हुई है with Swapna Darshan. So we'll go through that. We'll have announcement. We'll have Michhami Dukram, and then followed by Arti, Mangal Divo, and Panch Parmeshti. So that's a short format of today's program, and we'll basically I don't know, to start with, we'll go with 3 Naukars, and I am checking if Jayesh bhai તમે અહીંયા છો? If so, can you unmute and give the confirmation, please? Acha, Neha Ben, are you here?
Gajendra Bhai, are you here? Gajendra Bhai, Bhavna Ben? Yes. Okay, thank you, Gajendra Bhai, Bhavna Ben. Can we request you to start with Naukar, 3 Naukar, and 1 Naukar, and we'll just check whether Kitna Ben, are you here? Kitna, you need to unmute yourself. Yes, I am. Thank you. All right, thank you. So Gajendra Bhai, Bhavna Ben, તમે પહેલો નૌકાર બોલશો, પછી Kitna Ben તમે બીજો, અને Neha Ben, we see you in here. Can you unmute and confirm you are here? Can you see us? Yeah, we can see you. Bhavna Ben, we can see you. Start. Oh, sorry, Neha Ben is in Mon. Do we have Jayesh Bhai? All right. So Bhavna Ben, તમે પહેલો નૌકાર રિસાઇટ કરશો, ગાશો. Kitna Ben, તમે બીજો, અને Chirag Shah, can you do third naukar, please? We have Dev and Ramaji. Oh, Dev and Ramaji, are you guys here? Are they there? No. Okay, no, we'll take the third one. Okay. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vachayanam. Namo Savasahunam. Eso Pancha Namo Karo. Sarva Pavapanasano. Mangalanam cha Sarvesim. Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Should I start the second one? Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Pancha Namo Karo. Sava Pavapanasano. Mangalalancha Savvesim. Padhamam Havai Mangalam. Padhamam Havai Mangalam. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Pancha Namo Karo. Sarva Pavapanasano. Mangalanam cha Sarvesim. Paramam Bhavai Mangalam. Paramam Bhavai Mangalam. With that, we'll continue our journey, Bhaktimay journey with Stavan. Pehle Monica ji, followed by Supriya ji, and then baad mein it will be Prafula ji. जय जिनेंद्र। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे
बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा, पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती। क्यों करता तू मेरी मेरी, तज दे उस अभिमान को, तज दे उस अभिमान को। झूठे झगड़े छोड़ के प्राणी, भज ले तू भगवान को, भज ले तू भगवान को। जग का मेला 2 दिन का ये, जग का मेला 2 दिन का ये। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे ही माला माल हुए, वे ही माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो। बात कहूँ मैं भली भली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जीवन में दुख है तब तक ही, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया वे सच्चा इंसान नहीं, वे सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन को ये चमन खिला है, 2 दिन को ये चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। थैंक यू। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। आई पर्व पर्यूषण ये, हर सुख का द्वार है ये। क्षमा मांगे क्षमा कर दे, महापर्व का सार है ये। आई पर्व पर्यूषण ये, आत्म की भूमि में बीज धर्म का बोना है। प्रभुवाणी की बरखा में मेरा मन धोना है। प्रभुवाणी की बरखा में मेरा मन धोना है। मन मन निर्मल कर दे, भक्ति की बुहार है ये। क्षमा मांगे क्षमा कर दे,
महापर्व का सार है ये, आए पर्व पर्यूषण है। तप जप आराधन के ये आठों दिन उत्तम, मुक्ति पद दिलवाए, ये धर्म के 10 लक्षण, मुक्ति पद दिलवाए, ये धर्म के 10 लक्षण। दिन साश मीना प्रदीप, प्रभु का उपकार है ये, क्षमा मांगे क्षमा कर दे, महापर्व का सार है ये, आए पर्व पर्यूषण ये, हर सुख का द्वार है ये, क्षमा मांगे क्षमा कर दे, महापर्व का सार है ये। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र। सो महावीर स्वामी अपने परम कृपालु, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और उनका एक स्तवन। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। परम पावन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो चरम तीर्थंकर, तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो चरम तीर्थंकर, तुम्ही सर्वज्ञ सप्तर्षि सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्हारी ज्ञान महिमा की कहानी बहुत भारी है, लुटाने से बड़े हरदम सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्हारी ध्यान मुद्रा से अलौकिक शांति जलती है, तुम्हारे ध्यान मुद्रा से अलौकिक शांति झलती है। वीर भी क्रूरता छोड़े, सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्हारा नाम लेने से जगत में वीरता जागे, तुम्हारा नाम लेने से जगत में वीरता जागे। हटा दे कर्म लश्कर को, सदा जय हो, सदा जय हो।
श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू मोनिका जी, सुप्रिया जी और प्रफुल्ल जी, ये पूरा माहौल एकदम भक्तिमय बनाने के लिए और एकदम ये इवेंट अप्रोप्रिएट स्तवन गाने के लिए थैंक यू। So next, I mean, we unique circumstances, right? We are in unique circumstances, and it calls for pretty unique response, right? So, इस साल जैन समाज ने we did this boli for to give for everyone to take love and understand for within the category of tap, tyag, and adhyatmi. And the response that we saw is nothing but phenomenal. I mean, it has brought the best out of Jain Samaj as we can see it, especially from Jain Samaj ladies. It's just awe-inspiring. It's amazing. Khub anumodna to everyone who actually expressed their bhav in any of this boli. It was it is especially to the ladies who actually outdid other bhagyasali in their bhav. So this, Jigar, if we go back to the previous slide, yeah, thank you. So Swapna ji and Palna ji's lab goes to Anjali ji. To think about 161 Ekasham, it's essentially half of the year Anjali ji would be doing Ekasham. That's absolutely amazing bhav and commitment. हमारी पूरे जैन समाज से आपको आपसे निवेदन है कि आपका पारणा 161 दिन 161 एकासन के बाद आपका जो पारणा होगा उसमें हम सबको लाभ लेने का अवसर दे। हम यही चाहते हैं कि when that event comes, we are actually in a situation to enjoy how we are used to and supposed to, ekdam dhamdhum se. That's what we are all hoping and praying for. Anjali ji, thank you so much. Aapka dhanya ho. And Anjali ji today, along with Piyush ji, are ready for us to take us through this journey of Swapna ji and Palna ji. In just a small bit. Next thing, सकल संघ को मिच्छामि दुक्कड़म और उत्तम क्षमापना का लाभ जयश्री कैलाश जैन को, जयश्री जी कैलाश जैन को मिला है. She is basically going to do 1,331 count of Naukarva, which is essentially 1,43,000 or 143,748 Naukar. We all know, right? Shastra says that each Naukar brings so much positivity, so much love to an individual, and we are all living proof of it. We all have experienced it in one way or another. To have 143 and 1,43,748 Naukars, 1,331 Naukarwadi is just amazing. Dhanya ho Jaysri ji. Jaysri ji will be asking for Uttam Kshama right before Aarti starts. She'll be the first one, and then we'll be going through the entire compilation of Pure Sakal Samaj Micham. Yeah, the next Labharthi of Adinath Bhagwan's Aarti
is Shwetaji. Ratri Bhojan Tyag for 666 days. I mean, it's Ratri Bhojan Tyag, especially in Colorado, is pretty hard when our days are shorter for pretty much half of the year, right? And to show the bhav and to have a commitment for over almost 2 years is absolutely great. Sweta ji, thank you. आपका धन्य हो. And she will be doing Adinath's Aarti right after Kshama in a little bit. Mangal Divo, Rasmi ji is Labharthi of Mangal Divo. She is going to do Shwadhyay for 30 minutes every day for 1100 days. To put it in perspective, that's little over 3 years. For 3 years, Rasmi ji will be conducting Swadhyay for 30 minutes every day. You're already a person with a great depth of knowledge, wisdom, and this whole commitment is only going to help basically get you in your journey even more further. I'm pretty sure you will have an in-depth knowledge and understanding of various aspects of the Dhanya Ho Rasmi ji. Rasmi ji will be doing Mangal Divo right after Sweta ji does Aarti. And the last one, but not least, is Kanmul Tyag. The Labharthi of that is Jalak ji. Jalak ji committed 631 days. It's almost 2 years. It's nothing but remarkable. But at the same time, I've heard Jalak ji never had any Kanmul up until now, which is awe-inspiring, right? Which is amazing. But to commit to that journey, to show your bhav that you are committed to continuing your tradition is just it's mind-blowing. Thank you so much. Dhanya ho aapka. But I also felt like, or we also felt like Jalak ji's name was pretty much all over this particular one. Because she was committed, or she must be committed to her journey of not having kanmu. So Dhanya ho. And Jalak ji would be doing Panch Parmesh Aarti, which will be followed by the Mangal Divo from Rasmi. So एक बार सभी लोग, I mean, you guys can use emojis, reactions and all of that, but सभी तपस्वी और लाभार्थियों के लिए एक बार जोर से तालियां, जोर से just exactly, you can do this even with that. एक दो तीन चार सभी लाभार्थियों का जय जयकार. एक दो तीन चार सभी लाभार्थियों का जय जयकार. So with that, I will be passing or handing this over to Shraddha ji and Monica ji, who has helped kids 8 years and younger to put this beautiful Dev Darshan together. With that, I'll pass it on to Shraddha ji and Monica ji. Monica? Yeah, I am. Yeah, Jai Jinendra everyone. So today our partial kids are presenting a small video about Dev Darshan. And before starting their video, I would like to thank to all the parents who did great efforts and did a fantastic job. I know we gave you very less time, but you all did very nice job. In this video, our kids are trying to explain importance and each step of the temples. We really hope you all will like that. And if you missed any part, Michami Dukam for that. Yeah, you can. Thank you.
घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन। Jai Janendra. Today I'm going to talk about the temple. One can pray anytime, anywhere, but a special sacred place is the temple. It is called Mandir or Derasar. Jain temple is viewed by as a replica of Samava Saran. Going to the temple regularly can bring awareness in our thoughts and actions. Primarily, two types of images exist in the Jain temple. Semi-closed eyes are adopted by the Digambar tradition, and images wide open eyes are adopted by the Swapna tradition. Hello everyone, today I'm going to be telling you two things that you should do when you should be careful of when you're going to the temple. First, you should look down and make sure you don't kill any bugs. Second, you should wear clean clothes and wash your hands. Third, you should not go without anything in your hands. You should always have some offerings, right? Good job. करूं रोज पूजा तेरी धूप दीप जलाऊं मैं। करूं रोज पूजा तेरी धूप दीप जलाऊं। Jai Janendra. Today I'm going to tell you about Nasihi. Nasihi means giving up. It is said 3 times in the temple. The first Nasihi is said while entering the temple to discard all the thoughts relating to outside world. The second Nasihi is said while entering the actual area of the gods. The third Nasihi is said right after finishing the worship of Dravya Puja and the beginning of Ba Puja. Why do you ring the bell in the temple? Because the bad energy goes away and the good energy comes here. How many times you ring the bell in the temple? 3 times. Can you do Jaikara? Yeah. Bolo Swami Marvi Jai Jai Jai. फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं मैं। फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं। And everyone, Namo is the king of all mantras. Namo mantra is the only mantra in the world. That entire verse is a mantra. A single line of it is also a mantra in itself. And even one alphabet of it is a mantra in itself. That's why we should know it and chant it in the temple. Namo Arihantaram, Namo Setaram, Namo Ariyaram, Namo Vajayaram, Namo Loestavisaram. झगमग झगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए। जगमग जगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए। When we go to the temple, there's 3 types of namaskars. The first one is Astang Namaskar. This is how you do it. The second one is Panchang Namaskar. This is how you do it. The third one is Gavasa
and I'm going to talk about Pradakshina. Pradakshina means moving clockwise in a circle from left to right around God's idol. When doing Pradakshina 3 times, it means we are wishing to get Samyak Dosin, Samyak Gyan, Samyak Charitra, so that we can be free from the life cycle of birth and death. Namokar mantra or any study can be chanted while doing Pradakshina. Jai Jinendra. जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। Jai Jinendra everyone. Today I'm gonna show you how to do Pakshal Puja. First of all, you need to wear pure clothes and a new Mickey Mouse. For Pakshal Puja, you need Pakshal with half milk and half water. मेरो शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरो शिखर नवरावे। White Fatima with a new cloth. Now we will do Jai Puja. ज्ञान कलश भरी आत्मा, समता रस भरपूर, श्री जिनने नवरावता, मारा करम होए चकचूर। Again we will wipe it with the same cloth. Now we can do Kesar Puja. Thank you everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Today I will tell you all about Abhishek Kriya. We do Abhishek in morning, always wear clean clothes, dhoti dupatta. We do Abhishek with warm water. I wish I could do Abhishek in Denver temple soon. जब आरती हो तेरी मुझे घंटे सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटे सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। Jai Jinendra everyone. Today I am telling you about puja. We do puja with Astadravya. I am going to tell you their name. Jal, Chandan, Akshat, Pushp, Nevedya, Deep, Dhoop, Fal, Arg. Michhami Dugram to everyone. Happy Paryushandra. Today I am going to tell you about a mala. The mala had 108 beads on it. The top of a mala looks like a sickle. It is also called a mirror. The top 3 beads on your mala stand for Kyan, Darshanam, and Charitra. I'll tell you how to use it. First, you hold it in your hand on the right hand and then rotate it 3 times on a loop. Then hold the mala and then you say Loka mantra for each bead until the 108. Thank you. Jai Jinendra. भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। Jai Jinendra. My name is Paridhi Shah.
yourself. There are 5 types of Svadhyaya. Vachana means to read. Prachna means to ask self or guru. Children and everyone, Aarti is sign of joy in our life. Let's see how to Aarti. We light diya while doing Aarti as a sign of enlightenment in our life. Aarti should be done above navel and to the level of heart. We do take care any jeev doesn't get harm as ahimsa is our main aim. Aarti should be done always in a clockwise direction, and the wick that we use for Aarti should be always in odd numbers. It can be 1, it can be 5, it can be 7. Aarti should always be done with a ghee ka deepak. Cover head as a sign of respect. मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। दर्शन करने के बाद हम वापस जाते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी पीठ भगवान की वेदी की तरफ ना हो। हम हाथ जोड़कर पीछे जाते हुए कहते हैं असही असही असही। वहीं श्वेतांबर परंपरा में कहते हैं अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही, यानी कि जिन देवों ने हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए स्थान दिया वे वापस अपने स्थान पर आ सकते हैं। मंदिर के द्वार पर यदि गंधोदक पात्र रखा हो तो गंधोदक को शुद्ध हाथों से आंखों पर, गले पर और मस्तक पर लगाते हैं। आते जाते दादा तुमको मैं प्रणाम करूं। आते जाते दादा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। Amazing work. Very nice. It was so much fun to see all the kiddos. Good job, Monica. Good job, Shraddha. Thank you. It was very well put together. Thank you. Parents for doing this. It's hard to get those 5-year-olds and 6-year-olds to do a video. So thank you. It was very nice to see all of them. Thank you again. Yep, that was a wonderful performance. Thank you, kiddos. I definitely, I learned something new from you, but I'm pretty sure there are others in this boat as well. So thank you so much. I request parents really, thank you for helping showcasing your kids to show their talents. It's amazing. This is going to help help all of us do Dev Darshan correctly whenever we have Jain temple here. Hope we have a Jain temple very soon here. And have a request to all the parents of those young kiddos. Give them a big hug, give them a pat on the back. They did absolutely phenomenal. Thank you so much. And thank you, Shraddha ji and Monica ji and Chirag Shah for giving this wonderful script. It was awesome. Thank you. So we'll continue our journey again now. So we basically will be going into the Swapna ceremony, or will be basically we'll basically go into the Swapna ceremony in a bit. But we'll first start with Stavan from Anjali, and then I'll have one Stavan as well. Anjali ji. Jai Jai. रंगीला सपना देखे प्रभुवर हाथ आई ऐसी अनुपम याद कृष्ण की है बात हो जनेंगे परम दयालु जग की कारण मार ये तो
तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। गजवर निराला, गजवर निराला, मोहती नीर हटावे, ऋषभ सुहामना, ऋषभ सुहामना। अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी की है बात हो। अपना देखे ऐसी बात हो, की है बात हो। सपने में लहराए चमका कल्याण हो, खुशी की है बात हो। सपना देखे अंजलि जी एक सेकंड, थोड़ा ऑडियो का इश्यू, इट्स गेटिंग लिटिल लो. Piyush, can you see if there is something going on your end? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी परफेक्टली आ रही है. यस, ओके, आप फिर से शुरू करो. वी आर ऑल हियर, सीरियसली वी आर ऑल फाइन. या चलो ठीक है, फिर से शुरू कर दो. रूड़ा रंगीला सपना देखे प्रभु अरे रात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु जग के धारण हारे, तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। पहले सपने में देखा गजवर निराला, गजवर निराला, मोहती वीर हटावे, ऋषभ सुहामना, ऋषभ सुहामना, सिया अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदान हो, खुशी की है बात हो। रंगीला सपना देखे अनुपम रात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो। चंद्र पिताला उगता सूरज तेरे दूर अंधियारा, आठवें सपने में गजा लहराए, होगा आत्म का कल्याण हो, खुशी की है बात हो। मंगल कलश और पद्म सरोवर, 11 जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर,
देव विमान और के रत्न साज में अग्नि की सौगात हो। खुशी की है बात हो, रंगीला सपना देखे रघुवर आई ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो। जय जिनेंद्र। Thank you. Jai Jinendra, everyone. आज के पावन अवसर पर त्रिशला माता के नंद लाला महावीर भगवान की का स्तवन गाते हुए, हे त्रिशलाना जाया मांगु थारी माया, ओ हे त्रिशलाना जाया मांगु तारी माया। गेरीवळ्याचे मुझने मारा, गेरीवळ्याचे मुझने मारा, पापुना पड़ छाया, हे त्रिशलाना जाया ओ मांगु तारी माया, ओ हे त्रिशलाना जाया ओ मांगु थारी माया। बाकुड़ाना भोजन करीने चंदन बाड़ा तारी, तमे चंदन बाड़ा तारी। चंड कोशीना जेर उतारी, एनेली दो उगारी, तमे एनेली दो उगारी। रोहिणी जेवा चोर लुटारा, रोहिणी जेवा चोर लुटारा, तुझ पंथे पलटाया, हे त्रिशलाना जाया ओ मांगु तारी माया, ओ हे त्रिशलाना जाया ओ मांगु तारी माया। जुदा थईने पुत्र जमाई, केवो विरोध करता, जुओ केवो विरोध करता। गाड़ो देगो शाड़ो तोए, दिल मा समता धरता, तमे दिल मा समता धरता। जेर ना घुटड़ा गड़ी जईने, जेर ना घुटड़ा गड़ी जईने, प्रेम नाम रुत पाया, हे त्रिशलाना जाया हो मांगु तारी माया। सुड़ सजेवी श्राविकाने, करुणाणी संभारी, तमे करुणारी संभारी। विनवु छु हे महावीर स्वामी, लेसो नहीं विसारी, तमे लेसो नहीं विसारी। सड़गंता संसारे देजो, सड़गंता संसारे देजो,
सुखनी शीतल छाया है त्रिशला ना जाया हो मांगू तारी माया हो हे त्रिशला ना जाया हो मांगू तारी माया. So we'll continue our journey of Swapna Darshan. Again, Shraddha ji and Monica ji, our teachers, Pathshala teachers, have helped kids 8 years and older put together this beautiful journey, beautiful event, which is also referred to as a Garv Kalyana. And I उसमें जब during Paryushan, right, India में पांचवें दिन in particular, which is on Wednesday, अपने यहाँ पे Wednesday on पांचवें दिन कल्पसूत्र का जो चौथा व्याख्यान है, जिसमें ये पूरा डिस्क्राइब किया है, पूरा ये जन्म गर्भ कल्याण इनफैक्ट, और ये इसमें एक बहुत ही मतलब ये एकदम रोमांचक इवेंट, आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांचक इवेंट है. Shraddha ji and Monica ji help kids put together that beautiful event that they will be describing, which basically उसमें describe होता है कि कैसे भगवान महावीर का it basically was conception happened in Devanand, who's actually a Brahmin family, and how that whole transfer of that happened to Trishla Mata, who were both Queen Trishla, who at that time was Queen Trishla was at that time was also pregnant, but and also she belonged to the noble warrior family. So it explains this whole beautiful event. Request you stay with the kids as they explain and take us through that journey. One another thing that is circulating recently up, if you want to celebrate even further on Wednesday, between 4 and 5, which is this usually happens in the afternoon. दोपहर में होता है इंडिया में usually, according to especially to Shwetambar ritual. So 4 to 5 में आप 21 डंका बजा सकते हो to celebrate this on Wednesday at between 4 to 5. So keep that in mind. With that, I'll actually hand it over to Shraddha ji and Monica ji to take us all through that Trishla Mata's journey and 14 Swapna Darshan ceremony, which will be done by Anjali ji and Piyush ji. So we have our presentation running up there. Kids 8 years and older this time have prepared their own content for each of the swapnas. So we assigned each kid their own swapna, and they did their own research and they built their own slides. So whatever is going to be shown up here is the work of the kids. It's the kids themselves, and I appreciate all the parents who've helped the kids to put together content. I think most of it was done by the kids themselves. These kids are very independent, so no parent help as such. But one thing is for sure, that everybody is excited, and please encourage them by listening to them and not paying your attention elsewhere. We want your attention 100% on our kids and see them how they learn things. So off to Prisha to begin with the introduction. Hi, I'm Prisha and I'm going to do the introduction. My vow was to do 1 Ekashna during Paryushan and no Karsi for 3 weeks.
Mahavir Bhagwan's soul was a heavenly god in the 10th heaven before being born as Prince Vardhaman. At midnight on his sixth day of the bright half of Ashad, his Ayushya Karma ended, and so did his life as a heavenly god. He was conceived in the womb of a Brahmin lady called Devananda. That night, Devananda had 14 dreams, which she woke up and told her husband about. Their son would be a great one gifted with many virtues. Lord Indra's throne started shaking, and he used his special power of Jnana to look at distant things. He learned that Lord Mahavir was going to be born in Devananda's womb, who belonged to a Brahmin caste. For a moment, Indra was puzzled but then he realized this was the result of Mahavir's previous karmas from his third life, in which he bragged about his race, indicating that his race was best among all races. At that time in India, Brahmins earned their living by performing rituals for a warrior caste, such as the king. Hence, the warrior caste was considered the best among all castes. Thank you. Risha, just a quick thing before we move on. Is to say all these kids 8 years and above have decided to take one vow. A vow could be anything like an Ekashna, like Prisha has one for Ekashna during Paryushan or Nakarsi, or just as simple as doing Jai Jinendra to your parents and things like those. So when they present their slide, they're also going to tell all of us what they decided to do as part of a Tyag and Tapasya for this year or this position, whatever time frame they have decided on their own. Sorry. Yeah, so we can go to the next slide for Arna. However, Indra said to himself, Tirthankar may be conceived in any caste due to his karma, but he must born in a Kshatriya warrior caste. It is the characteristics of a warrior caste to fight against evils. Mahavir's soul must take a birth in a warrior caste so that he will be able to fight his karma until he attains Keval Gyan. I will move his soul to a warrior family. An angel named Hari, with his divine power, put Devananda into a deep sleep, removed the soul, and then left to go to Queen Trishla's palace. He used his divine power to put Queen Trishla in a deep sleep, and then he performed the exchange of the souls. Digambar sect believes that Mahavir was conceived by Queen Trishla and not by Devananda. That night, Queen Trishla had 14 great dreams, 16 dreams as per Digambar tradition. The dreams filled her with immense wonder and joy. She woke her husband King Siddhartha and told him what she saw in the dreams. He told her that those dreams seemed very auspicious. The next day, King Siddhartha summoned scholars to his court and asked them about the meaning of these dreams. My vow is one upas during Paryushan. Good job. Next. Suraj. Queen Trishla's first dream was of an elephant. This massive, impetuous, and auspicious creature had 4 tusks and was gifted with marks of excellence. This dream symbolized the birth of a child with exceptionally good character and indicated her son would save human beings from misery, greed, and destruction of life. And my vow was to not eat at night during the selection days and no outside food. बोलो बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय, साचा देव की जय। बोलो।
नीचे सबको दर्शन कराना बेटा। यहाँ पे इधर कैमरे में देखिए, कैमरे में देखो। बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। चिराग भाई सेकंड। Queen Trishula's second dream was of a bull. The color of the bull was white and it glowed with light and beauty. Its horns were superb and sharp pointed. This dream indicates that her son will be a spiritual teacher of great ascetics, kings, and other great personalities. My vow is puja three times a month at least for the next 12 months. बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जय। उसको Yeah. Queen Trishula's third dream was a lion, with claws sharp and well poised, with a well-rounded head and extremely sharp teeth, lips red and eyes sharp and glowing. His tail impressively long and well-shaped. Queen Trishula saw this lion coming towards her, to her mouth. This indicated that Lord Mahavir would be strong and powerful, fearless, even capable of ruling the world. My vow is doing puja 2 to 3 times a week and 4 to 5 times a week, all for a month. बोलो बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जय। उसके ऊपर लाइन के ऊपर बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। Yay! इधर दर्शन करा दीजिए। किधर तेरे हाथ में पकड़ ले ऐसे दर्शन कर। चल प्रशांत जी उठो। बोल सिर्फ बोलना शुरू कर। The fourth dream Queen Trishula saw was of the goddess of truth, the goddess of wealth, prosperity, and power. She was seated at the top of the mountain Himalaya. Her feet had a sheen of gold turtle. She had delicate and soft fingers. Her black hair was tiny, soft, and delicate. She wore rows of pearls interlaced with emeralds and a garland of gold. A pair of earrings hung over her shoulders with dazzling beauty. She held a pair of bright lotuses. This dream indicates that her son will attain great wealth, power, and prosperity. My vow is Namakasi for 1 month, Ratri
Bhojan Tyag during the Paryushan, Ekashna, Priyashna in Paryushan. बोलो बोलो भगवान की जय। प्रदर्शन करा दूं सबको। The next dream of Trishna Mata was a pair of garlands, a symbol of popularity and respect. A beautiful celestial garland of flowers descending from the sky appeared in Trishna Mata's fifth dream. It smelled like mixed fragrance of different flowers. The whole universe was filled with their fragrance. The flowers were white and woven into the garland. They bloomed during all different seasons. This dream indicated that the fragrance of her son's preaching would spread throughout the entire universe and he would be respected by all. I vow Ratri Bhujan Tyag for Padyushan and this Lakshan Parv. One of Kar Mantra Jap daily during this Lakshan Parv and Akashna on Anant Chodas. Thank you. बोलो बोलो श्री बोलो महावीर बोलो महावीर स्वामी स्वामी भगवान की जय। The seventh dream Queen Trisha saw was of a huge bright sun. The sun was shining and destroying any darkness while lotuses bloomed at its touch. The sun stopped all the evil activities of the creatures who dive at night. The meaning of the bright sun indicates that greed, malice, anger, and pride, etc., would be stopped by the teachings of Lord Mahavir. My vow is no Ratri Bhojan during Paryushan and 2 Ekashnas during Paryushan. बोलो 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 महावीर स्वामी भगवान की जय। Full moon. The moon radiated whiteness like a swan, inspired the oceans to soar skyward and presented an auspicious sight. This dream indicates that her son will have a great physical structure and be pleased to all living beings of the universe. And my vow is 1 month no eating after sunset and saying Jai Chandra every morning to my parents. बोलो बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। Use your right hand and just कुछ
छोड़ दो राइट हैंड से दर्शन करें उसी को। The eighth dream Queen Trisha saw was of a very large flying, was a very large flag flying on a golden stick. The flag fluttered softly and auspiciously in the gentle breeze. It attracted the eyes of all. Peacock feathers decorated its crown. A radiant white lion was on it. This dream indicates that her son will be a great, noble, and a well-respected leader of the family. My vow was Ratri Bhojan Tyag during Paryushan and at least 2 upas during Paryushan. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। The ninth dream Queen Priscilla had was a golden vase that was filled with clear water. The vase was magnificent, beautiful, and bright. It was a joy to behold, and it shone like gold. It was decorated with garlands that had strings of lotuses and other flowers. The vase was not touched by anything from sun or stones. This dream indicated that her son would be compassionate towards all living beings, and that he would be perfect in every virtue. It also indicated that he would be a leading religious personality. For my vote, I will do Upwas during Paryushan. I will become a 12 Vret Brahmin. महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के आनंद की जय। The 10th dream that Queen Trishna had was of a lotus lake. Thousands of lotuses were floating on the lake, and they all opened at the touch, all opened at the touch of the sun's rays. The lotuses had a very sweet fragrance. There were swarms of fish in the lake. Its water glowed like flames. The lily leaves floated on the water. This dream indicated that her son would be beyond worldly attachments. He would help liberate human beings who were tangled in the cycle of birth, death, and misery. I vowed to try to do 1 upwas and 2 ekashana during Paryushan, and I will become a 12 Rati Sharika. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।
The 11th dream, Queen Trishula was of an ocean. This dream indicated that her son would have serene and pleasant personality. He would achieve the infinite perception and knowledge and would escape from worldly life, which is the ocean of birth and death and the misery. This would lead his soul to moksha. ये पुत्र भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता होगा. My vows was greet Jajanendra every morning, Ratri Bhojan Tyag, no root vegetable, one Navakarli daily and one Akashna during the Lakshan Parva. Jajanendra. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। पीयूष वीडियो नहीं आ रहा है। राहुल वीडियो नहीं आ रहा है अभी। We can see. We We can see it, yeah. Chirag, we can see it. Oh, is it? Okay. Now we can see it. Okay. Celestial plane. The 12th dream Queen Trishla had was of a celestial plane. This dream indicated that all of the angels in heaven would respect, salute, and honor her son's spiritual teachings. And my vow is Ratri Bhojan Tyag during Paryushan. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। Jai Janendra. I'm going to talk about Queen Trishla's 13th dream. The 13th dream of Queen Trishla was a big heap of jewels. It was a mixture of crystals, gems, precious stones, and gold. This dream represented that her son would acquire qualities of infinite wisdom and virtues, and that he would attain the supreme spirit. My vow was no root vegetable for 15 days and no Ratri Bhojan for 15 days. Jai Janendra. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। The 14th dream Queen Trishla had was of a smokeless fire. The fire burned with great intensity, but there was no smoke. This dream indicated that her son would reform and restore religious order. He would remove blind faith and orthodox rituals. Further, he would burn or destroy his karmas and attain salvation. My vow is whenever I water my plants, I will say Namokar mantra to them. Jai Janendra. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।
In the Digambar tradition, Queen Trishla's 15th dream was a pair of fishes. This dream indicated that her son would be extremely handsome. My vow is to do arti for 15 days. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। Lofty throne. The meaning of the lofty throne is the 16th dream was the lofty throne, which indicated that the person would have a very high spiritual status. The meaning of all the dreams is that a child to be born would be strong and courageous. He would have all living creatures attain liberation, and he himself would attain liberation too. बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। Thank you all the kids for walking us through the presentation. Everyone did a good job, and good job for your vows. Yep. Thank you, kiddos, and their parents for allowing to showcase their kids and putting this wonderful presentation together, kiddos. And thank you, Shraddha ji and Monica ji, for working with kids, pushing them. I know it was a few cases where they had to be pushed a lot, and it was a last minute deal. So thank you for staying on top of it. But no, it was a wonderful presentation. So we'll continue with our so we'll basically, Jigar, you want to put the Palna ji, Jalma Vachan video. So yeah, I will play the video. Yeah. So in India, right after or iske baad, matlab after Swapna ceremony, Maharaj Sahib normally Swapna Vachan karte hain Kalpa Sutra se. So besides what kids shared, right, all the virtue ability of God, जब भगवान महावीर का जन्म हो रहा था, तब all the stars were perfectly aligned. All the fruits and all the vegetables were growing at their best ability. All the flowers were having they were blooming at the right capacity, and they बहुत ही सुगंध था. Everywhere the world was so perfect to welcome Bhagwan Mahavir. It was a divine event, divine moment for the entire Brahman because of all this, because of that, all the stars were aligned. So in India, Maharaj Sahib jab ye vanchan karte hain, it describes that beautiful thing. That's what we'll be playing for 4 minutes. So please follow through and take benefit. सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वचायणं नमो लोये सम्बसावण में समझन मुकारो स्वभावपणासनो मंगलानं च सम्मे सिंहणं मम वै मंगलं पूर्णिमचरिमाण कप मंगलमद्यमाण तिच्छम्मि या परिकय्या जिनगण हराई थेरावली चर्यम् केणम कालेणम तेणम समेणम समणे भगवम मावीरे जैसे किमाणम पढ़मे मासे दुच्चे पखे चित्त सुद्धे
तत्सणम चित्त सुतस तेरसी दिवसेणम नवनम मासाणम बहुबड़ी पुण्णाणम अद्युट्टमाणम रहिंदियाणम भी कंताणम उच्चट ठाण गएसु पड़मे चंद जोगे सोमासु दिशासु बीच मिलासु विशुद्धासु जयेसु सब सवणेसु पयायणाणु कुलंसी भूमि सप्पनसी मारुयंसी पवातंसी निपन्न मेणियंसी कालंसी पमुय पक्किनी असुजनमेसु वो काल वो समय में श्रवण भगवान महावीर परमात्मा ग्रीष्म काल का प्रथम मास द्वितीय पक्ष चैत्र सुद 13 के दिन 9 महीना बराबर परिपूर्ण होने के बाद और 8 रात्रि दिवस प्रसार होने के बाद भगवान महावीर के साधना गर्भगृह समय के साथ 24 तीर्थंकर भगवान के गर्भ समय की बात करते हैं। आप सबको मैं गर्भ समय का दिन बोलूंगा और आपको एक एक भगवान का नाम बोलना है पहले से लेकर के 9 महीना 4 दिवस, 8 महीना 25 दिवस, 9 महीना 6 दिन, 8 महीना 28 दिन, 9 महीना 6 दिन, 9 महीना 6 दिन, 9 महीना 19 दिन, 9 महीना 7 दिन, 8 महीना 26 दिन, 9 महीना 6 दिन, 9 महीना 6 दिन, 8 महीना 20 दिन, 8 महीना 21 दिन, 9 महीना 6 दिन, 8 महीना 26 दिन, 9 महीना 6 दिन, 9 महीना 5 दिन, 9 महीना 8 दिन, 9 महीना 7 दिन, 9 महीना 8 दिन, 9 महीना 8 दिन, 9 महीना 8 दिन, 9 महीना 6 दिन और 9 महीना 7 दिन। ऐसे समय पसार होने के बाद प्रथम चंद्रयोग होते चले चारों ओर दिशा, कोई न धूल है न कोई गलत चीज है, वह उल्लास पूर्वक अंधकार रहित चैत्र सुद 13 का दिन ऐसे भी शुक्ल पक्ष है और परमात्मा के समय में कई हर जगह सर्वत्र उद्योत होता है, विशुद्ध दिशा है, सर्व सकुन माने काक उलूक आदि कोई किसी का आवाज नहीं होते, प्रदक्षिणावर्त वायु चलता है और सर्वत्र प्रचंड वायु ऊंचाई सर्वदे प्रचंड वायु ऊपर से जा रहा है और ऐसे स्थिति में सर्वत्र निष्पन्ना समस्या मिदिनी, कोई दुकान नहीं है, सर्वत्र सुकाल है, सर्वत्र लोगों में आनंद वसंत उत्सव चलता है। ऐसी स्थिति में बराबर मध्य रात्रि के समय में पूर्व रात्र पुरकान समय आरोग्य काल समय से अद्भुतायन कटन चंदनम जोगम वागेणम आरोग्यम दारम मध्यान्ह काल के समय में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का योग आते छते आरोग्य माने संपूर्ण स्वस्थ ऐसी माता त्रिशला देवी ने निराबाद संपूर्ण तंदुरुस्त पुत्र रत्न को जन्म दिया। So अभी दिस मार्क्स द इवेंट के भगवान महावीर का जन्म हुआ। To celebrate this, to continue our bhav, we will continue with couple of stavans while Anjali ji, Piyush ji and Rahul ji gives us the labh of this parna. So with that, I'll ask Shweta ji and Amita ji to go through their stavan, which basically helps us celebrate Bhagwan Mahavir's Janam. जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारनिहारो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारनिहारो वर्धमान नो नाम धरीने वर्धमान नो नाम धरीने
प्रगट्यो तेज सितारो विख जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो पृथ्वी पर थी अंधकार ना बादल जाने बिखराया बादल जाने बिखराया गायो मंगे गीत अप्सरा देवो नाम ने हरि खाया देवो नाम ने हरि खाया नार कीना जीवो निरख्यो नार कीना जीवो निरख्यो तेज तनो धन कारो एक जन्मो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो एक जन्मो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो बाल बचा धरतीना पेटे वीर बचा सरवरियाना वीर बचा सरवरियाना चंद्र सूरज ना चंद्र सूरज ना तेज वधानी सब मानवना संपवधा सब मानवना दुख ना दिवसो दूर गयाने दुख ना दिवसो दूर गयाने आवो सुख नो आवो जन्मो राज दुलारो जन्मो राज दुलारो दुनियानो शंख जनो ना दिल मां बसरियु आश भरेलो अजवालो आश भरेलो अजवालो पहली दुखियानो रहशे ना कोई नौधारो रहशे ना कोई नौधारो भीड़ जगत नी भांगे वो भीड़ जगत नी भांगे वो सबनो पालन हारो एक जन्मो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो जन्मो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो शरणाई खुशीनी सीधा रखना आंगनिए सीधा रखना आंगनिए खेत ही छोड़े ओ खेत ही छोड़े कुशला रानी काल कुंवर ने पानी काल कुंवर ने पानी प्रजा बनी आनंद की प्रजा बनी आनंद की घर घर उत्सव गाओ जन्मो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो जन्मो राज दुनियानो तारनहारो नो नाम धरीने वर्धमान नो नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो विख जन्म्यो राज दुनियानो तारनहारो जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारनहारो Jai Jinendra, everyone.
त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा आरे रा रा रो त्रिशला झुलाए वीरा मीठे मीठे लोरियों से त्रिशला झुलाए वीरा मीठे मीठे लोरियों से अखियों में नींदिया बाल मेरा सो जाए त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा आरे रा रा रो चांद सा चमके मुखड़ा अखियों में बहती करुणा लाल मेरा जग का दुलारा लाल मेरा जग का दुलारा तुझको निहारो नजर उतारो मेरे नैनों का तारा वर्धमान मेरा प्यारा त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा रे रा रा रो त्रिशला झुलाए वीरा मीठी मीठी लोरियों से त्रिशला झुलाए वीरा मीठी मीठी लोरियों से आँखियों में नींदिया बाल मेरा सो जाए त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा रे रा रा रो धन्य हुई मैं पाकर तीन भुवन के स्वामी पावन बना मेरा जीवन पावन बना मेरा जीवन दीपक बनना जिन शासन का सितारत शृंगारा जग का तारण हारा त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा रे रा रा रो त्रिशला झुलाए वीरा मीठी मीठी लोरियों से त्रिशला झुलाए वीरा मीठी मीठी लोरियों से आँखियों में निंदिया बाल मेरा सो जाए त्रिशला झुलाए वीरा आरी रा रे रा रा रो आरी रा रे रा रा रो जो महावीर स्वामी भगवान की जय जय साचा देव की जय जय before we go to the Kshamapna, Chirag, you want to go through few announcements? Sure. धन्यवाद चिराग भाई जय जिनेंद्र सभी को बहुत सुंदर कार्यक्रम का लाभ मिला हम लोगों को पीयूष भाई अंजलि जी से सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी टू कंटिन्यू ऑन आज नेक्स्ट हाँ सो आज दोपहर में मेहता परिवार यानी पीयूष भाई और अंजलि जी ने स्वप्न दर्शन का लाभ रखा हुआ है तो जिनको भी अगर ऑनलाइन अगर आपको है ना दर्शन करना है स्वप्न का पालना जी का तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या अगर किसी को अनुकूलता है तो वो ड्राइव करके वहाँ पे जा सकते हैं उन्होंने सुविधा वैसे ही रखी है ताकि कहीं कोई है ना मिलना जुलना नहीं हो सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो और उनके घर के बाहर से ही आप दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे एक विंडो से आप दर्शन करके फिर आप आगे प्रस्थान कर सकते हो सो कृपया इसका लाभ लेना भले ही अगर आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो समझ सकता हूँ मैं बट उसके हिसाब से आप आज दोपहर में 3 से 5 आपको लिंक जेसॉक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में भेजा जाएगा तो उसमें भी आप ना ऑनलाइन उसका लाभ लेना
नेक्स्ट हर साल जैसे हम लोग समाज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे आओ, समाज के आगे ग्रोथ के लिए डोनेशन जो भी मेथड हो, जो भी जितना भी हो उतना, ताकि हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकें, इसको आगे ग्रोथ की तरफ। आज आपने देखा बहुत बच्चों ने सुंदर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने देव दर्शन की विधि की पूरा एक प्रोसेस समझाया। तो हम लोग चाहते हैं कि वैसे ही आगे आपके फंड से जो भी छोटा बड़ा हो उसके थ्रू हम लोग आगे एक अपना जो गोल है, लक्ष्य है कि हम लोग यहाँ पे एक अपना मंदिर हो, उसके हिसाब से हम लोग उसका एक उसके उसके अगेन उसके फॉर दैट पर्पस अगर वो है ना कंट्रीब्यूशन चलता रहे तो अच्छी बात है। हम लोग ने अभी पेपाल भी लास्ट ईयर जैसे शुरू किया था वैसे ही ना पेपाल के थ्रू भी ये प्रोसेस है अभी एक्टिव। सो आप ये जो पेपाल ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और हम लोग व्हाट्सएप पे भी उसको एक बार भेज देंगे ताकि आप उसके थ्रू भी आप डोनेट कर सकते हो पेपाल के थ्रू, या फिर आपको अगर कैश करना है, चेक करना है, वायर ट्रांसफर, अगेन ऑल ऑफ दीज आर tax exempt as always in the past few years. So request your contribution in any form. Your donations are much appreciated towards a larger goal. जैसे हर साल हम लोग एक सामूहिक प्रतिज्ञापन रखते हैं, इस साल जो अपनी अभी जो कोविड की स्थिति है उसके हिसाब से कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम लोग सामूहिक प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। तो हमारी आपसे यही विनती होगी कि आप अगर हो तो अपने घर पे एक प्रतिक्रमण करो, स्वयं अपने परिवार के साथ, या फिर अगर आपका अनुकूलता हो तो अपने मित्र, बंधु या फिर फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आप ये प्रतिक्रमण जरूर करना। तो ये हमारी विनती है, बट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी सोशल gathering together. So at your convenience you can follow and continue with the प्रतिक्रमण। एक दो जगह नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो जैसे अभी लास्ट कुछ समय से श्रद्धा जी और मोनिका जी पाठशाला को लीड करते आ रहे हैं। बीच में कोविड के कारण रोकना भी पड़ा था हम लोग को, और हम लोग की यही है ना ये इच्छा है कि आगे चलता रहे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि और परिवार बड़े बड़े जो हैं आगे आके पाठशाला को लीड करने का सहयोग करें। तो सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जिनको भी इच्छा है कि वो थोड़ा समय निकाल सकें, हम लोग एवरी अदर संडे का प्लान था, वैसे ही आगे भी प्लान करने का है हमारी इच्छा। तो उसके हिसाब से भी रिक्वेस्ट एडिशनल पेरेंट्स टू कम फॉरवर्ड, इसको सहयोग प्रोवाइड करे, वरना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑन गोइंग बेसिस। कोई भी कारण से किसी को कहीं जाना पड़े या किसी को कोई और वो सिचुएशन परमिट नहीं करता है कि वो पाठशाला कंडक्ट कर पाए वो समय में, तो हम लोग को उस समय कैंसिल करना पड़ता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर आगे और पेरेंट्स जमा हो तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। अगर वो सिचुएशन, अगर पेरेंट्स नहीं मिलते तो we'll have to relook at how do we do the पाठशाला, because we might have to combine with other Samaj members only because there are other plans for the current teachers. In next few months to next 6 to 12 months, they have their own long-term plans where they might be not in Denver for longer periods. So again, my sincere request to parents to come forward, let Shraddha, Monica, myself or Chirag know of your interest, and we would welcome your support. इस पर्यूषण पर्व के बाद बहुत सुंदर 10 लक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा 23 अगस्त से। सो हम लोग सोच रहे कि ये 8 दिन और ये 10 दिन का कार्यक्रम चलता रहे, लोग खूब स्वाध्याय करें, खूब भक्ति भावना में जुड़े रहें। ऐसे समय में हम लोग से यही विनती है कि लोग इसका पूरा लाभ उठाए। तो सोच रहे थे कि जैसे हम लोग ने कल समन जी का एक प्रवचन रखा था, वैसे ही अगले शनिवार को एक प्रवचन होगा, रविवार को भी एक प्रवचन करने की इच्छा है हम लोग की, और उसके फॉलोइंग 30 अगस्त को भी प्रवचन की इच्छा है। बट उसके साथ हम लोग सोचे थे कि इस बार अगर जैसे 10 लक्षण के 10 दिन होते हैं, तो अगर कोई भी परिवार एक दिन का अगर उसको टॉपिक का डिटेल में थोड़ा बाकी समाज को प्रेजेंट करें शाम को लेट्स से 7 से 8 बजे तक, जहाँ पे हम लोग आधे घंटे का उसका टॉपिक का वर्णन करें, डिस्क्रिप्शन
शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों का ना नॉलेज बढ़े उसके साथ। स्वाध्याय समझ लो, वो स्वाध्याय एक तरीके से, और फिर हम लोग उसको आरती दीवों के साथ संपन्न करेंगे वो कार्यक्रम को। सो अगेन है ना, ऑनलाइन है ना, अपने गूगल स्प्रेडशीट में है ना आप अपना नाम लिख सकते हो। कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वी आर ऑलवेज हियर, बट वी encourage families to come forward. This gives us an opportunity to learn as well, and provide that same knowledge to others in our community. So we look forward for your support coming forward. So एक before this है ना जिगर भाई, दो और अनाउंसमेंट थी। एक जैसे हम लोग ने अभी है ना महावीर जन कल्याणक का जो समय था अप्रैल में, तब हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक अपना परिवार का एक फोटो, चाहे अपने मंदिर के साथ या बिना मंदिर के, जहाँ पे अगर आपके घर में सपोज पूरा सेटअप नहीं है मंदिर का, तो भी ना जैसे भी आप एक परिवार के साथ एक फ़ोटो अपने गूगल ड्राइव पे, गूगल फोटोज़ पे एक लोड कर देना। तो इस समय इस ओकेजन पे भी मेरी विनंती है आपसे कि आप अपने परिवार के साथ एक फ़ोटो लेके, वो गूगल फोटोज़ आपको लिंक भेजा जाएगा, उसमें अपलोड कर देना। फ़ोटो आज लेके रख दो, जैसे ये प्रोग्राम संपन्न होता है उसी समय आप फ़ोटो लेके रख लेना। और ये फ़ोटो आगे भी कई कार्यक्रम में उसका है ना उपयोग होता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक प्लीज़ है ना फ़ोटो एक लेके रखना। दूसरा, जैसे ना चिराग भाई ने कहा कि भगवान का जब वांचन होता है वो वेंसडे का है दोपहर के समय में, तो मेहता परिवार की है ना ये भी इच्छा है कि वो एक भक्ति का कार्यक्रम रखें ये बुधवार को। सो उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, शाम के समय में रहेगा, ताकि सब लोग आप है ना जुड़ सको, अच्छी से भक्ति हो पाए, और अपने भगवान की है ना जन्म की अपन है ना पूरी भक्ति से अपन है ना उसका मजा ले पाए। सो उसका इन्फॉर्मेशन आपको भेज दिया जाएगा, बट वेडनेसडे का प्लान है वो। आई थिंक है ना दीज आर फ्यू अनाउंसमेंट्स। जिगर भाई वापस स्लाइड डेक पे चले जाते। और जैसे हर साल अपने यहाँ पे काफ़ी लोग, कोई भी काफ़ी लोग तपस्या करते हैं, किसी से एकाशना होता है, ब्यासना, उपवास, अठम, या फिर रात्रि भोजन त्याग, नवकारसी, पौरसी, उन सभी तपस्वियों को खूब खूब अनुमोदना अपने समाज से। अपना समाज अभी आज 50 फैमिलीज करीबन जुड़ी हुई है, और इसी एंकरेजमेंट से आज अपने बच्चों का भी देखा अपन ने कार्यक्रम की, हर एक बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप एक छोटा सा वाव लो, भले एक दिन का हो, एक महीने का हो, एक साल का हो, या 3 महीने का हो, जैसे भी आपको है ना उसका आपको ना कन्वीनियंस हो, बट एक पाथ पे अपने चले जो अपने को सिखाया गया है, जो अपना ना धर्म का ना मार्ग है वो। सो with that, I sincerely want to recognize everybody who's doing tapasya. I know it is the second day of Paryushan Parva, and we have Das Lakshana Parva coming in, but we want to make sure you continue your tapasya in full sata, and from our Jain Samaj, khub khub anumadna. And then I think this is the first time we are putting this virtual event together. We were also not very certain how this will work. I think there was a decent amount of planning. I wouldn't say there was too much or too little, but there was a decent amount of planning gone in with various people, parents, kids, support from outside, our youngsters, folks in today who are there, 50 plus folks today, their participation, everything counts. Every hour, every minute of your contribution counts, even if it is your support, even if it is your good wishes in your bhav, in your mind, all of that matters. So, and I think we've done a decent job today with what we've seen so far, that we've gotten this opportunity to do remote Swapna ceremony, Palna event. And again, I wanted to recognize everybody who's come forward together. There are many, many names behind this. Some of the names obviously have not been called out. So we apologize or Michami Dukram to them, but I want to take this moment and recognize every individual, small, big, who's come forward, or even a single thought has come forward to make this a decent event. So thank you. Chirag bhai, back to you. Jai Jinendra. Thank you, Chirag. So we will, Jai Sri ji, Kailash ji,
आप जब भी रेडी हो, आप सकल संघ को मिच्छामि दुक्कडम कहने के लिए विल पास इट टू यू. जय जिनेन्द्र. जयश्री जी, आपका वीडियो बंद हो गया. हाँ. अभी पास. हाँ, हो गया. जय जिनेन्द्र सभी को पर्युषण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. सभी तपस्वियों को साता पूछते हुए खूब खूब अनुमोदना. जेसोक कमेटी के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए. इस पावन पर्व पर सबसे समय याचना का मौका मिलना सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्य का महत्व रखते हुए काया वचन और मन भावों से कृत करित और अनुमोदन से जाने अनजाने में, अज्ञान में, आगात अनागात वर्तमान में, आहत जो भी किया हूँ मैंने, गलती कभी जो की हूँ मैंने, संचित कर्मों को समापन हेतु आज हे क्षमाशील क्षमा प्रार्थी मैं आज कर बद्ध निवेदन से शुद्ध भाव से क्षमा पर देकर क्षमा का ज्ञान कीजिए विकारों का समाधान. उत्तम क्षमा. जो क्षमा मांगे वो वीर, जो क्षमा करे वो महावीर. मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम. मिच्छामि दुक्कडम. जय जिनेन्द्र. पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सादर जय जिनेन्द्र. सभी तपस्वियों को खूब खूब अनुमोदना और साता पूछते हैं. मैं पूरे समाज और जेसो कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें समाज के सामने ये मौका मिला समय याचना करने के लिए. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्त क्षमा के जो जीवों को खुशहाल करते हैं, टकराव दूर होते हैं और खुशियां हजार देते हैं. खुश रहे, खुशियां बांटे, महान उसे कहते हैं. अंतर मन से क्षमा याचना. मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम. मिच्छामि दुक्कडम. So Jigar, while you play the next part, sorry Chirag, I just wanted to, I forgot one announcement. Sure. Michami Dukram for that. Obviously we've organized a Bhaktamar part on August 30th for the entire Samaj to come together and recite Bhaktamar part. We highly encourage, a lot of people have come forward to participate in that. Obviously we have a few spots open. Today we have 47 people and we have 48 part. So I'm hoping that everybody can sign up for one. All we need is for you to take few minutes of your day, not more than 5 minutes. If you have more, obviously great. But take a few minutes, go through the beach mantra, recite it, learn it, and the same time also go through a slok, whichever you signed up for. So again, sincere request if you can sign up for that so that we can conduct this event in a complete flow on August 30th. Jai Jinendra. और सभी सदस्य और मेंबर जेसोक के मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने शेयर किया ये सकल संघ मिच्छामि दुक्कडम वीडियो बनाने के लिए. पीयूष जी ने कंपाइल किया हुआ. दैट्स व्हाट जिगर विल बी प्लेइंग नेक्स्ट. सो थैंक यू अगेन. It has come out to be a beautiful one. I hope you all enjoy it. कामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूएषु वेरं मज्जन केणै मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि
जय जिनेंद्र। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो या हमने आपका दिल दुखाया हो, मन वचन काया से उत्तम क्षमा। क्षमा वीरम भूषणम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। सकल संग्रह मिच्छामि दुक्कडम। सकल સંઘને મન વચન અને કાયાથી મિચ્છામિ દુક્કડમ मिच्छामि दुक्कडम મિચ્છામિ દુક્કડમ। Hold your hands instead of grudges. Spread cheer instead of bitterness. Build bridges instead of walls. Strengthen bonds instead of prejudice. Forgive us if we have hurt you by our action or inaction, by our words or our silence. મિચ્છામિ દુક્કડમ। સકળ સંઘને મિચ્છામિ દુક્કડમ। 10 મનના 10 વચનના 12 કાયાના એ 32 દોષમાંથી જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય તે સવિહુ મન વચન કાયાએ કરી મિચ્છામિ દુક્કડમ। મિચ્છામિ દુક્કડમ। 84 લાખ જીવાયોની માએ કોઈપણ મારા જીવે કોઈપણ જીવને હણ્યા હોય, હણાવ્યા હોય કે હણ્યા પ્રત્યે અનુમોદ્યા હોય તો મન વચન કાયાથી મિચ્છામિ દુક્કડમ। जय जिनेंद्र एवरीवन। राठौड़ परिवार की तरफ से आप सभी को मन वचन और काया से बोले चाले मिच्छामि दुक्कड़म। संसार है गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए हमारा निवेदन स्वीकार। सकल जैन समाज और सभी को उत्तम क्षमा। मिच्छामि भारत वर्ष में मन वचन काय की किसी भी क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको दुख पहुंचा हो तो हम सभी करबद्ध होकर आपसे क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। जाने अनजाने में मन वचन काय से या अपनी वाणी से हमने आपका दिल दुखाया हो या किसी प्रकार की ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म। सकल संघ हमारा बधानी वती मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र एवरीवन। 10 मन के 10 वचन के 12 काया के 32 दोषों में से जो कोई दोष जाने अनजाने में लगा हो, जिससे आपका कोमल हृदय दुखा हो तो हम सच्चे हृदय से आपसे क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म। खावे में सब जीवे सभ्य जीवा खबन तुम्हें मित्य में सब हुए सो वैरम मज्जन के नहीं। मिच्छामि दुक्कड़म। Micchammi dukkadam to our days of family. Jai Jinendra to all Jain Samaj families, old, adults, young, ladies, gents, everyone. So last 12 महीने में जो भी हमारे से गलती हुई हो, हमने आपका दिल दुखाया हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म खमत खामना to each and everyone, small, young, old. So खमत खामना मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम खमत खामना। खमत खामना मिच्छामि दुक्कडम। कायम रखना सुखी सुख हो। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। हो सब प्राणी को आज क्षमाओ दिन ये पावन आया। कर्म निर्जरा होगी मेरी मांगू प्रीत की छाया। जैन धर्म की संस्कृति खमत खामना की ज्योति। जैन धर्म की संस्कृति खमत खामना की ज्योति। क्षमा अहिंसा सीख वीर की हर एक दिल में हो। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम।
भूषणम् इच्छामि दुःखम् क्षमावीरस्य भूषणम् हो। Thank you, Piyush ji, for a very beautiful creation. But to end on that, पूरे जैन समाज की कमिटी की तरफ से हमारे से ये पूरे वर्ष दरमियान कुछ भी गलती हुई हो तो we are asking for your or begging for your forgiveness. Please forgive us, and just it's all in the good wishes and good thoughts. Thank you, and with that we'll continue with Aarti. Shweta ji and Chirag ji, if whenever you are ready. Chirag bhai, I think Piyush bhai wanted to say. Oh, sure. Absolutely. Go ahead, please. Piyush. जय जिनेंद्र एवरीवन। चिराग भाई ने ऑलरेडी बोल दिया, पर हम दोनों की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से हम आपसे विनती करते हैं कि आप आज जो भी हो सके प्लीज आप आज पधारें और दर्शन का लाभ लें। और बुधवार को शाम को भी हम लोग एक ऑनलाइन भक्ति के लिए आप सबसे विनती करते हैं कि आप प्लीज अपना अमूल्य समय थोड़ा सा निकाल के और भक्ति में भी हम लोग को ज्वाइन करें। जैसे चिराग भाई ने बोला, विल शेयर द डिटेल्स शॉर्टली, बट प्लीज ऐसा लाभ हमें ये सब का लाभ दें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Jigar, I'll let you know, maybe just a couple of more seconds. Yes, yeah. I think I would request everybody else also to get ready for Aarti Divo so that everybody can do it if they prepared for their home. They prepared for their home. I think I would request all of us to do it together. Jigar bhai, we are ready. जय जय आरती आदि जिणंदा, जय जय आरती आदि जिणंदा, नाभिराया मरुदेवी को नंदा, नाभिराया मरुदेवी को नंदा, जय जय आरती आदि जिणंदा, जय जय आरती आदि जिणंदा, पहली आरती पूजा की जय, पहली आरती पूजा की जय, नर भव पामिने लाभो लीजे, नर भव पामिने लाभो लीजे, दूसरी आरती दीन दयाला, दूसरी आरती दीन दयाला, धूलेवा मंडप माँ जग अजवाड़ा, धूलेवा मंडप माँ जग अजवाड़ा, तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा, जय जय आरती आदि जिणंदा, जय जय आरती आदि जिणंदा, चौथी आरती चौगति चूरे, चौथी आरती चौगति चूरे, मन वांछित फल
शिव सुख पूरे, मन वांछित फल शिव सुख पूरे। पंचमी आरती पुण्य उपायो, पंचमी आरती पुण्य उपायो। मूल चंदे तव गुण गायो, मूल चंदे तव गुण गायो। जय जय आरती आदि जिणंदा, जय जय आरती आदि जिणंदा। जय जय आरती आदि जिणंदा। जय जय आरती आदि जिणंदा। कृष्णा जी, रश्मि जी सॉरी, जब भी आप रेडी हो। I think Rashmi ji is back now. या रश्मि जी, आप रेडी? Yes. दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। आरती उतारण बहु चिरंजीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। सोहामणो घेर पर्व दिवाणी, सोहामणो घेर पर्व दिवाणी। अंबर खेले अमरा बाणी, अंबर खेले अमरा बाणी। दीपाल भणे एणे कुल अजवाणी, दीपाल भणे एणे कुल अजवाणी। भावे भगते विघ्न निवारी, भावे भगते विघ्न निवारी। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। दीपाल भणे एणे कलिकाणे, दीपाल भणे एणे कलिकाणे। आरती उतारी राजा कुमार पाणे, आरती उतारी राजा कुमार पाणे। हम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक, हम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक। मंगलिक चतुर्विध संग ने हो जो, मंगलिक चतुर्विध संग ने हो जो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। बोलो बोलो जिन शासन देव की जय। जय।
Please turn the video on. Huh? Is video on? Yeah, I can turn it on. That's okay. Chalak ji or Jai ji, perfect. Whenever you're ready. नमोरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु में हम इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो कोई आरती करे करावे,
सो नर नारी अमर पद पावे। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। बोलो बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। साचा देव की जय। आज के आनंद की जय। जय। जैन धर्म की जय। So Chirag, I know before you wrap up, just want to take maybe 5-10 seconds. But I think there are people behind the scene that I just want to call out for all this beautiful back and forth. So Jigar, thank you for managing the entire audio video today. I think it was flawless for all the work that you had to do to move between multiple things in between. So thank you, Jigar. And I think there's always a orchestrator who puts all this together, right, for us to make a beautiful event on the day of the event. So Chirag bhai, khub anumodna for walking us through this journey today, and then kind of anchoring this for the entire Samaj. So thank you, superb. And then Piyush bhai, bunch of the work that you've done behind the scenes, communication, videos, etc. I just wanted to applaud for the work that you've done. Rashmi ji, Arpit, Shraddha, Monica, I think this entire crew has come forward for this beautiful event. So I think thank you on behalf of this the entire Samaj to all of you. Over to you, Chirag. Yep. Thank you. Thank you, Chirag, and thank you for leading pretty much most of it, Chirag. This was a beautiful format that you have put together and ideas and all that. So thank you so much. With that, we are asking for your forgiveness again in this particular event or throughout this year. If we have done anything wrong, knowingly or unknowingly, for the entire committee, volunteers, and all of that, we ask for your forgiveness. And with that, please visit, if it's possible, at between 3 to 5 at Piyush ji and Anjali ji's home for Swapna Darshan and Palna ji's Darshan. And please wait for instructions for Wednesday's events. And sign up for Das Lakshan, as Chirag mentioned, hosting that. And a quick reminder, again, there will be another session from Swamiji on next Saturday at 11 o'clock. सब लोग साथ में रहना. One last request, Chirag. If everybody can turn on their video, let's take a Zoom photo. Yes. So we are all seen. So everybody who's off the video, please bring your family together. If they're upstairs, downstairs, kitchen, wherever they are. Again, I know we are late by 30 minutes. We're always late. So bring your family. Let's take a picture and then we'll wrap it up. Okay, Piyush bhai, you got to take the picture, okay? And Jigar. Dheeraj bhai, your video is not on. I'm going to look around who's left. Gajendra bhai not been seen. Yeah, he's coming. Gajendra. Yeah, Ben, I don't know if you can switch on your video, but we can't see Harshil. see Harshit, he always wants to hide. Tani, Nirav, okay, thanks, Neha Ben. Nirav, Neha. Okay, Umit, I don't know who's Umit. I'm glad that you guys could join, but if you can turn on your video. Okay, now on the count of 3, Jigar, you're going to take the video photo, screen snapshot. Jigar? Yes, I got it. I got it. Okay, let's move to the second screen. You got it? Yes, no, Jigar?
Yes, got it. Okay. Again, thank you everybody. Satam Rana. Michhami Dukkuram. Michhami Dukkuram. Michhami Dukkuram. Michhami Dukkuram, everyone. Thank you. Michhami Dukkuram, Michhami Dukkuram. Michhami Dukkuram, Sakal Michhami Samaj. Dukkuram,